you will have a default routine and pattern anyway, right? Unschooling का बस ये फर्क है कि you get to design your own routine. Like sense of routine हम कैसे बनाएंगे? Yes. Along with we want our kids to explore and we want to give them freedom, but we want to have like something जिसको आप कह लें anchoring the day. What should children be really learning at home? So writing is a non-negotiable for sure. Math is a non-negotiable. कैसे facilitate करें कि वो independent learners बने जब हमें impose ना करना पड़े learning? Is that you as a mother need to be the one who is alert. तो बताएं कि co-ops बिल्कुल must है कि होना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर आप social networking का क्या करें for somebody who's living in a nuclear family? My firm belief that the socialization we have in school is very artificial. You need to be clear on your end goal. You need to be certain on your mission, ठीक है? And you need to stop justifying to people who will never understand why you do something. I think I can talk about it for another 2 hours, but I want to for people to understand कि लोगों का ये होता है जिस तरह जो you're very strong and you're very brave, Fatma, to do it your way, and you're just very creative and you're curious, or आपको you're not worried about the outcome. But for somebody who's starting उनका ये मानना होगा कि इसमें तो स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, number 1, and number 2 कि अगर है भी sense of routine हम कैसे बनाएंगे? Along with we want our kids to explore and we want to give them freedom, but we want to have something जिसको आप कह लें anchoring the day. Yeah, so that's a really big misconception about unschooling. कि कोई routine नहीं है, right? बस hippie बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, whatever they want, right? Yeah, which my kids are just like that. But so the thing is that first of all, again, because my anchor is the deen. So as a Muslims, by default, हमारी routine बड़ी सख्त है. We do have a routine. Yeah, so we already have a routine. आप जितने भी hippie बनना चाहें, you can't, right? But we have a structure, we have a routine. The only difference is that we get to make it ourselves. That's what it is. I always say कि अगर आप intentionally routine नहीं बनाएंगे, आपकी कोई एक default routine बन जाएगी, बिल्कुल. Right? So for example, when you have young kids, and sometimes, I don't know, I went through this. I went through some really bad routines in my opinion, because I wasn't intentional about them, right? So, late utna, late sona, it becomes a habit. अगर आप वो intentional होके उसको रोकते नहीं, उसको change नहीं करते, right? So you will have a default routine and pattern anyway, right? Unschooling का बस ये फर्क है कि you get to design your own routine, and that, for example, could look just like a school routine. But the point is, I got to make it. Yeah. My family and I sat together and we made it ourselves. किसी ने हमें force नहीं किया, right? So that's the difference. अच्छा, so next सवाल है कि आप कितने अरसे से कर रही हैं unschooling? Unschooling is more recent, maybe the last 4 years. उससे पहले we've done homeschooling. Okay. Which means I was actually replicating. So homeschooling, you'll hear all of these fancy schools of thoughts and different systems. So I was more of a classical, what they call a classical homeschooler. So we used to have we still do in some ways, but हमारा बस अब फर्क ये है ना कि हमारी बस routine हर महीने change होती रहती है. That's what it is. We go back because life has been very unpredictable for us. So I actually became an unschooler by force. Oh. Yeah, the life में जो पिछले कुछ साल थे ना, they were so unpredictable for me and my family. A lot of instability, a lot of moving, बहुत सी चीजें, having a baby will throw you off of everything, right? सारी routine आपकी. Yeah, yeah. So in that, I feel like unschooling became my way of just अपने आप को तसल्ली देना. It's okay. Life is still happening, but it's just happening literally one day at a time, right? There were times when day by day मैं नए routine बनाती थी, right? And then there were times where 2 महीने पे we are not even thinking of making a routine. We're just following life wherever it takes us, right? अच्छा, so again जब हम homeschooling या unschooling की बात करते हैं तो people are very focused इन क्वेश्चंस जो मैंने ऑडियंस से फीडबैक रिसीव किया है, बिकॉज आई थिंक मैंने होम स्कूलिंग पे लास्ट ईयर वीडियोस बनाना शुरू किया है. तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि लर्निंग को हमने एकेडमिक्स में डाल दिया, एक डब्बे में डाल दिया कि दिस इज लर्निंग. सो आई हैड टू अनलर्न दैट टू व्हेन आई स्विच टू होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग कि
you know, it's okay if my kids are doing karate and they're doing their Quran lesson with Qari Saab and they're just free playing all day. There is some learning that's happening passively. ठीक है, ज़रूरी नहीं आपने डंडा लेके उनके सर पे बैठ के उनको ये वर्कशीट्स करानी है तो मेरा गोल अचीव हुआ है. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि एकेडमिक्स के अलावा आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज यू बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, व्हाट शुड चिल्ड्रन बी रियली लर्निंग एट होम? Yeah, there are. I think that's a good question. So yeah, अगर आप notice करें मेरे अक्सर, I know मुझे बहुत messages भी आते हैं. I'm so sorry to everyone. I'm just not there yet. I want to have more workshops. You know, for example, like English का क्या करना है? You know, math का क्या करना है? Very focused workshops, and I hope maybe you can, you know, mashallah, you can see Iram is doing amazing work. Community grow हो रही है. हाँ, बिल्कुल. So I feel like maybe now I will have the help and the team to start doing this. So I understand. अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है जब मुझे सुनते हैं या मुझसे बात करते हैं कि आप ना बड़ी जनरल बातें करती हैं. It's because I don't know your circumstance. And I feel like, you know, अगर मैं अपनी कोई चीज़ बताऊंगी वो it may not work for you. And people don't have, like you said, I'm like, you know, I seem more independent and strong, but like I went through a long journey to get here. Right? So I feel like it might actually stress people out more. Right? But what you're... I think the pressure to achieve it, like मेरे अंदर तो ये हो रहा है कि wow, how do I get there? But thank you for like, you know, you went through your journey. Yeah, maybe in the next episode we'll do like my maybe the kya kahani hai, the sad stories, you know, and what made me stronger. The struggles, The struggles, yes. But yeah, to answer your question, there are some non-negotiables which I think are non-negotiable because they're based on science as well. You know, they're based on, there's data that these things are beneficial for you. So for example, ये नहीं कि हम स्कूल की हर चीज़ लेकिन उसको बाहर फेंक रहे हैं. No, it's not about that. It's that जिस तरीके से हम वो चीज़ कर रहे हैं. For example, math जिस तरीके से हम कर रहे हैं, it's different, right? Because जो for example एक स्कूल कर रहा है, स्कूल A कर रहा है, maybe it won't work for us, right? For my kids. So basically, I would say writing. Building the skill of writing, because that's involves so many other sub skills, thinking, reflecting, sentence formation, grammar, and सब कुछ इसमें आ जाता है. So writing is a non-negotiable for sure. Math is a non-negotiable, and I am not a math person. Me too. And you know, I was actually मेरी वजह से वही opinion मैं बच्चों में भी डाल रही थी unknowingly. So now I actually have to do some work to, you know, get them back into, you know, being, you know, liking math, right? I gave it to my husband. You're gonna teach them. I've outsourced stuff that I can't, right? So I have like a tutor who comes in and does that. But I'm very involved in like, kya kar rahe hain? I do check in and I make recommendations, right? But also, like, just side note, math is seeing it as a language. It's not really something कि आपको बस अज़ियत देने के लिए करवाया जाता है. It's more of like, it's actually logical. Really, it's good for certain parts of your brain. बिल्कुल. So it's like a brain exercise, right? मैं बच्चों को भी कहती हूँ, hey, you know how just how we want to make our body stronger, you have to do certain things to make your brain stronger, right? तो you know, overcomplicate हम कर देते हैं चीज़ों को. Very simple explanations हैं. You know, so math, writing. Deen, of course, you know, एक तो होता है ना कि the best and obviously the most effective way of teaching or passing down deen to your kids is by practicing it yourself. Okay? And just having open discussions about it, right? Not confining it. But there are things like fiqh ke masail hain. There is an academic part of our deen that we don't take seriously. You know, a lot of people I've seen in Pakistan, just deen is just Islamiyat ki class. एक दो सूरज memorize कर दिया. Of course, पूरे हफ्ते में एक क्लास होती है फातिमा. पूरे हफ्ते में. My son used to have this one class, Islamiyat की, and last year he was in grade 3 जब मैंने उसको स्कूल से निकलवाया है. तो he was always, mashallah, he always knew कि जो भी chapter वो करा रहे थे, because मैंने schooling में भी कोशिश की है कि उसको कॉन्सेप्ट पता हो. तो लाइक इट्स वेरी स्लो. पूरे हफ्ते में आप एक क्लास करा रहे हैं, उसमें बच्चे क्या सीख सकते हैं? Yeah, exactly. So it's just I do think, look, I do think हम एक दूसरे extreme पे भी चले गए where we're trying to make things more fun. That's another extreme हर चीज़ में fun. Like no, you have to do hard things. You have to be bored. You have to, you know, there's
there is room there. We need to be traditional in some ways as well, you know. So ये चीज़ें भी हैं. I do feel like हम लोग अपने जो दीन स्टडीज हम बहुत wash down कर देते हैं. So यहाँ से मेरा like ये इसमें नहीं है, but एक personal सवाल आ रहा है कि like what is your routine with your deen curriculum? Like you do it in the morning and you know for how long you're doing it, and like आपने उसको किस तरह आप लेके चले हो. पहले आपने सीरत पढ़ाई है, फिर कुरान कराया है या stories कराई हैं prophet की. Like what was your thing for somebody? So one thing is you have to understand that there is no end to learning anything. Okay, तो कोई you can have a beginning, you can't have an end. Okay, so what that means is there's no rush. सीरत एक ऐसा topic है कि मैं चाहूँगी कि all of us, that my kids have an attachment to it until the day they die. Right? So a really easy way to do things is I love baskets. If you come to my house, सब टोकरियाँ मिलेंगी आपको, you know, everywhere. So we have a corner in the house where we have a morning and evening basket. Okay, yeah, it's really easy, super simple. You know, inshallah, maybe I know, I need to make all of these reels about these things, but best time नहीं मिल रहा. So we just will tag you as a collaborator. हम बना के डालेंगे आपके लिए. आपका नेकी और पूछ. So basically, we have baskets, and the morning basket has like morning dua books, and then it has what is it like? So I'll change up the books once in a while. Yeah, right? This is what I do. Yeah. You have to change up the books, right? So for example, one day, I think the last book we read was A Long Walk to Water. So it's like while the kids were getting ready, because we do have morning classes to go to. So while the kids are getting ready and ashta ho raha hai, so I'll just read a couple of chapters. It's a really like good story, by the way. So you know what sun bhi rahe hain, ho bhi rahe hain. बीच में if I feel like किसी दिन बहुत interest नहीं है, I just let it go. You know, that's the flexibility I'm talking about, right? But yeah, dua books हैं, you know, सीरत की ऐसा है ना that. So it depends on when we have time, either in the morning or evening. So I switch them up. They're right next to each other, the books. So we'll just do, it's so easy, it just takes 10 minutes. What you do is just take, like, for example, right now we're doing the Simple Seerah. There's so many great books out there now, right? Simple Seerah, and then we just read a couple of pages. You know, kabhi main padhti hu, kabhi Hawa padhti hai. We take turns, right? And that's it. You know, वो खत्म हो गई, दूसरी book शुरू कर लेंगे. You're just we put on a timer, 10 minutes तक पता हमने ये book पढ़नी है, right? Another thing I would really make a non-negotiable is just talking about at least one name of Allah. हर रोज भी तो कभी हर कुछ दिन बात कर लिया करें, right? It's something that's really important, right? And just उससे आप बस शुरू करें, फिर discussions will flow. बिल्कुल. वो खुद ब खुद organically हो जाएगा. शुरू में it's okay to try to organize everything very strictly. It's okay. You know, sometimes when I don't know how to tackle a topic, I ChatGPT पे जाके I'm like, give me conversation questions to talk to with a 14-year-old regarding this topic. Use these tools. Be creative in how you use them, right? Yeah, that's pretty much it. You know, and sometimes we'll have like different storybooks as well. You know, so I guess to sum it up, I would just say Seerah, some sort of a Seerah book, some sort of a book about like you know, Allah's names, and a read aloud. A book that you read as a family, front, you know, cover to cover. It can be non-fiction, it can be fiction. Sometimes when I don't have the energy, I'm like audiobook लगा लेते हैं, right? And we'll just do something like, you know, कुछ कोई color कर रहा है, कोई bracelets बना रहा है, you know, I'm just, you know, मैं अपनी सब्जी की list लिख रही हूँ, or something, you know, so something that just you're in the same space. Okay. Yeah. So this was I think very good example. But अगर इसको further हम इसी सवाल को थोड़ा सा expand करें कि facilitating learning without imposing, कि आपने उनके जो एक concept है ना कि मैंने साथ बैठ के कराना है और साथ बैठ के होना है, तो how can we, ये this is a very good example कि read aloud लगा दिया आपने, and you know you just all of you are doing their you know thing, आप अपना कुछ कर रही हैं, वो अपना कुछ कर रही हैं, passively learning हो रही है. So what if you have like other examples in your mind कि हम उनको कैसे facilitate करें कि वो independent learners बने, जब हमें impose ना करना पड़े learning. Yeah, it's funny that you asked that because this month I'm imposing a lot on my daughter because you know what, because I think that's the key, right? एक facilitator की job क्या है? To kind of try one thing, assess it, see how it's going, to be able to know okay, when do I need to step in more? Yeah. You know, कब मैंने छोड़ना है, कब मैंने lean in करना है, right? So for example, there was a couple projects that we were just, my daughter was just having a hard time finishing them, right? So I could tell that, okay, this is not just a motivation thing. This is not you know, she needs my help.
you know. So I think that comes from experience. Yeah. Just by doing it, because it's every child is different, you know. जो मेरी एक बेटी के लिए चीज work करती है दूसरे के लिए नहीं होती, right? So every child is different. Do you notice if you really notice what's really going on here is that you as a mother need to be the one who is alert, who is assessing situations, who is being creative with her resources, who is, you know, बच्चों के साथ one-on-one time आपने कैसे करना है, right? आपको तभी पता चलेगा ना when you're doing one-on-one. For example, I highly encourage people to, I've recently started doing this consistently and it's made a big difference. Okay, if you're able to, you need to spend one-on-one time with each child, right? उस पे आपकी कोई बजट की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, you know, make it happen, right? कोई भी आप में वसवसा, कोई भी रुकावट आपके ज़हन में आ रही है ना, you make it your projects कि ये तो मैंने करना है, ठीक है? And वो मैं तो हमेशा 15 minutes कहती हूँ हर मदर को. So how much time are you spending with your teacher? It just depends, right? So I like to, I'm trying more. Again, the last couple of years, I feel like I was so distant from my older two, you know, just because of the baby and all of that. So I'm trying, it's like I'm getting to know them again. By the way, again, it's never too late. Yeah. Don't feel guilty about that. You know, for me, when I would feel so guilty, रात को मैं रो रही हूँ, and I'm like, oh my God, you know, मुझे हवा के साथ time spend किया, आसे के साथ नहीं, and then I would literally, I'm like, oh, मेरे साथ सो रही हैं. They're safe. They're fine. What am I worried about? You know? The guilt is so strong some days, especially, you know, as a new mother and when you're focusing on one child. You're just like कि मैंने तो पूरा दिन उसको देखा ही नहीं और उससे कोई बात ही नहीं करी और मुझे नहीं पता what's going on in his life. Especially जब वो स्कूल जाता था, oh my God. अब तो मुझे ऐसा होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ही है, कोई ऐसी बात नहीं है. So I would just, you know, now it's like I'm getting to, you know, know them again, which is also, I feel like it's such a privilege, you know, to be able to do that. So what I do now is I actually, because I was having a hard time managing, my kids are older now, Havas are a bit older, right? So they're in their like tweens and teenage, so I can do more fun things with them, right? It's more fun. So one thing I do is I watch, we've started like watching a mom and daughter show together. So Hava ke saath mera alag show hai, Asa ke saath alag show hai. Yeah, and then we'll do, another thing I'll do is take them out for like coffee. Or just, you know, cafe jaake thoda sa ya ke aadha ghanta lag jayega, you know. So it just, I don't want to restrict the time because there will be weeks when you won't have time. Like abhi, this past week we just weren't able to schedule that in because we had guests and other family commitments and stuff. So, but you know what? Start talking to your kids. मैं बहुत अरसे चुप हो गई थी, मैं खामोश हो गई थी. And I saw that that's really, it was harmful for my health and them. Because when you get quiet, and I understand this when I was very hyper alert, कि मुझे बड़ों की एक चीज़ नजर आती थी, right? I was very critical. I was like, oh, you know, I could see their double standards, their, you know, everything, you know? So what I do now is, for example, I just start narrating stuff. Right? So, oh my gosh, guys, you know, I had a really tough day. You know, I'm sorry I won't be able to watch a movie with you, whatever, right? Kids just want to know कि अच्छा सब कुछ ठीक है. Right? One day I remember I got a lot of gifts for someone. I forget. It was like we were going to an event and I got a lot of gifts. बहुत अरसे से मैंने family को gifts नहीं दिए थे and whatever. And I kept spending like 2-3 दिन में बड़ा मेरा खर्चा हुआ. And my daughter was just like, really she was really stressed. I'm like, what's wrong, honey? I've seen, you know, like you've been so quiet, and she kept like judging my shopping. And I'm like, masla kya hai, right? Kuch aur ho raha hai. And she was like, I'm worried you're spending all our money. You know, I was like, that was a very big concern for her. I was like, oh no, honey, beta, aisa koi baat nahi hai. You know, फिर मैं उसको बताया कि देखो मुझे numbers बताने पड़े, वो देखो math lesson ही बन गया था. I was like, look, all of this, if I had spent it over the year, like, पिछले 2 ईदों को भी मैंने gifts नहीं दिए किसी को, you know, so I had to give her like the calculations. But she was really scared. You know, sometimes, you know, again, you have to be that energy in your home कि आप देख रहे हैं सबको कि क्या क्या हो रहा है. You notice that. So recently something happened and my son was
he felt the same. And he came to me and he asked me कि फिर तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे मम्मा. तो मैंने कहा like are you worried about money, like do you think कि हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और ये. And then I told him like you don't have to worry about these things, and mommy and daddy are here and we'll take care of this part. What a beautiful chance to talk to them about Ar-Razzaq. Financial literacy को side में go. You know, we're so obsessed with like you know financial literacy and I need my child to be financially literate. Yes, but before that you need to teach them about Ar-Razzaq. You know, आपके रिस्क आपका मसला ही नहीं है. And you know, मैं उस टाइम अभी आजकल I'm reading a book Healing the Emptiness by Yasmin Mujahid. And उसमें वो खूबसूरत पार्ट था where she was talking about कि शैतान is going to make you scared about your fear of loss. वो उस पर बहुत खेलता है कि कम है and you don't have enough and you have to, and he makes you do all sorts of haram or forbidden चीज़ें just for the sake of money and to have more. So I spoke about that and I told him कि this is a fear that you know the waswasa that शैतान puts in your head that you know हमारे पास कम हो जाएगा और we're going to have less, क्योंकि उसने कुछ इस तरह की बात की कि फिर मेरी ये चीज़ आएगी और मेरे हक की नहीं आएगी, you know, अपनी बहन की. तो फिर मैंने उसको कहा कि we have enough alhamdulillah and you know the concept of abundance कि जितना है अल्लाह का शुक्र है. Yeah, but do you also notice, Iram, what you just said something is very powerful. आप अपनी लर्निंग आपकी जारी है, आप कंटिन्यू कर रही हैं, you're reading, तो that's why you're able to share your knowledge with the kids. जब आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, अपनी growth ही आपकी नहीं है, तो how are you going to raise the next generation? And you know there are days when I'm not able to read. Of course. तो फिर उसमें I do feel कि you know blank कि मैं क्या आगे दूँ जब मेरे पास खुद कुछ नहीं है. So I do read, you know, this is also my non-negotiable for myself कि मैं daily कुछ ना कुछ पढ़ूँ, because मैं जो भी पढ़ रही होती हूँ वो मेरी किसी ना किसी बात में उन तक चला जाता है. Exactly. So they're not reading that book, but they're passively उन तक वो चली जाती है बात. अच्छा, so next और हमारी आवाम का फेवरेट सवाल, और मेरा भी होता था एक पॉइंट पर जब मैं होम स्कूलिंग की तरफ आ रही थी. अच्छा, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बट उससे मुझे सोशलाइजिंग वाली स्ट्रेस नहीं थी कि यू नो मेरे बच्चों के फ्रेंड्स का क्या होगा या फ्रेंड्स कैसे बनेंगे. तो ये बहुत बड़ा लोगों का एक, मैं कहूँगी एक मिथ भी है होम स्कूलिंग को लेकर के. फिर सोशलाइजिंग का क्या होगा, उनको लगता है हम पंजाबी में कहते हैं ना बुए मार के बच्चों को अंदर डक के हम पढ़ा रहे डंडा लेके कि पढ़ो और बाहर नहीं देखना और दोस्तों में नहीं जाना और कुछ नहीं, कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे अगर वो बाहर जाएंगे. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है? को-ऑप्स में होना क्या फ़र्ज़ है? अगर आप को-ऑप्स में नहीं है तो फिर, बिकॉज लोगों ने उसको इतना सीरियसली लिया है. मैंने एक दफ़ा ये कम्युनिटी सपोर्ट की बात की थी कि having you guys, you know, the meetup and the support, मैंने जिससे जो पूछा everybody was so welcoming और उन्होंने मेरे इतनी खुलूस से जवाब दिया. and they, एक होता है ना कि बहुत एक सर पे से उतारने वाला, एक होता है कि they really convinced me and they had like really good convincing points. तो मेरी confusion भी clear हुई. but लोगों ने उसको पता नहीं कुछ फ़र्ज़ बना लिया कि अगर हमें co-ops नहीं मिल रहे तो हम कैसे होम स्कूलिंग करें. तो उस पर बताएं कि co-ops बिल्कुल मस्ट है कि होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आप सोशल नेटवर्किंग का क्या करें for somebody who's living in a nuclear family. Yeah. Again, you know, it depends on who you're asking the question. Everyone will have a different answer based on their experiences. But yeah, so socialization का जो issue है ना, एक तो ये आप please अपने, you know, this is my firm belief that the socialization we have in school is very artificial. Yeah. Okay. Imagine आपको एक कमरे में, क्लासरूम में भाई फोर्स किया गया है और आपने सब आपकी सेम एज फेलोज हैं, राइट, एंड देन बड़े को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट, आपने इन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करनी है, सारी एक्टिविटीज आपने इनके साथ ही करनी है, राइट. रिसेस में भी इन लोगों के साथ ही आपने खेलना है. And you know जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है, sometimes they put you in a group where you don't want to be. But वो आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहे होते कि नहीं यही तुम्हारा ग्रुप है, ग्रुप A है और तुमने इसी में बैठ के, and you don't like these people but you're stuck with them. Yeah, exactly. You know, so I don't consider school socialization. It's work. It's a corporate job for kids. वो जाते हैं अपनी बस वो ना, और टाई भी है, टाई सब कुछ पूरा है. You know, it's like a corporate little mini, you know, mini corporate work. The show Boss Baby is one of my favorite shows. Oh my gosh, yeah. So it's literally like a Boss Baby wala scene, right? So but it's not cute. It's not cute. There's nothing cute about this. You know, you are literally wasting the kid's life. अगर मैं सब socialization की बात कर रही हूँ, मैं academics की भी बात नहीं कर रही. That's not how the real world works, right? बच्चों का, you know how what the real world is, आपकी family
you know, आपकी जो extended family, if you are blessed enough to have extended family, आधी तो उधर ही मजे की आपकी socialization होगी. They're learning so many real world skills from there, right? इसके सामने ये कहना, इसके सामने वो नहीं कहना, right? How to deal with like a learning about personalities, different personalities, how to that's emotional intelligence, right? How to deal with different situations in the best of manners, in the best of ways, right? हर बात पे फड्डा थोड़ी कर लेना आपने, राइट? अगर आप किसी को देखते हैं फैमिली में जो हर बात पे फड्डा करते हैं, यू नो लाइक ओ आई एम नॉट गोना बी लाइक दैट पर्सन, देखिए कितने बुरे लग रहे हैं वो बंदे, राइट? सो आई थिंक family is number one, that if you are blessed enough to have family around you, please go out of your way. अगर family वाले नहीं करे, आप कोई प्लान बना ले, ठीक है? be the one to gather people. पहले मैं बहुत तंग होती थी इस बात से. I felt like हाँ मैं ही करूँ हर वक्त, मैं ही वो चीज़ें करूँ. But that's your skill. I think not everybody can do it. But you know what? I think everybody can do it. I really do. But I see it as my strength also. Okay, you know, I'm good at this. I can gather people. Okay, I can create a co-op. I'm good at, you know, hosting people and having play dates. So you know, when you see it as something as your strength, then आप ज़्यादा ड्रिवन होते हो वो काम करने में, इंस्टेड ऑफ कि लाइक मैं क्यों करूँ या मैंने क्यों करना है. सो एंड देन फैमिली को तो लेके हम इतने नेगेटिव है फातिमा, जिससे भी आप बात करो कि वो फैमिली को तो एज अ प्रॉब्लम ही देखते हैं. ठीक है, बहुत सारे मसले होते हैं जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली के बगैर भी होते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप सारे पर्क्स उठा के कचरे में फेंक दो कि ये तो बस एक बुरी ही चीज़ है फैमिली. Yeah, you know, look, we cannot survive alone. Please, अपने होता है ना, अक्सर लोग वो करते हैं कि ये फलानी इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो भाई इनको तो किसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि योर इंडिपेंडेंस मीन्स आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है. बहुत गलत इंडिपेंडेंस है. Yeah, that is not independence. We need people. We need each other. You know, अब हमने इन लोगों में ही रहना है. You know, और तो कुछ नहीं, शादियों पे जनाजों पे तो आना है ना किसी ने. Like think of that. You know, so be selfish. at least इस तरह selfish हो जाए कि भाई मुझे connections रखनी है, लोगों को खुश रखना है, कि भाई कोई मेरे जनाजा पढ़ने आ जाए भाई. You know, it seems very grim, but that's the reality. Hey, you need each other, and I see this extreme thing of, look, I understand why people want to cut off each other. Trust me, I understand, right? Because we have given each other such a hard time. हम एक बिल्कुल दूसरे extreme पे चले गए थे, जहाँ पे इट्स कंट्रोल इन योर बिजनेस, कोई प्राइवेसी नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं. अब हम एक और एक्सट्रीम पे जा रहे हैं जहाँ पे बाउंड्रीज क्या दीवारें खड़ी कर दी हैं भाई. यू नो, इट्स लाइक अपनी कोई फिक की चीज़ें बना ली, अपनी वो जजमेंट्स बना ली विदाउट मशवरा फ्रॉम एनीवन, राइट? कम बैक टू द मिडल, राइट? वी लर्न हाउ टू बी assertive. It's one of those non-negotiable skills. Right? Assertive में और ज़िद्दी होने में फ़र्क है. Right? Stubborn and assertiveness is two different things. Right? So I think these are, ये तब होता है ना, you have to get out of your comfort zone. बिल्कुल. आपको, you know, I wish, I was just talking to a friend the other day, and they were like, so I got a trampoline. हमारी छोटी सी apartment है, उसमें भी ना, I went to return a vacuum cleaner and I brought back a little trampoline. छोटा सा, and my daughter's like, जगह कहाँ है, आप ले आई हैं? But you know why I did it? I did it because there's these girls next door. छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे घर आते रहते हैं, and I'm like, चलो they'll play, पीछे yard में थोड़ी सी जगह है and all of that, right? And I was like, these kids are kids. I know they've never seen a park. They don't go out. Right? So I was telling my friend, I was like, yeah, I would love for my house to be that house. Was khule. You know, just I, you know. And I think I'm getting to that. It feels amazing. But I do it with boundaries. It's on my terms. You can do both. And you don't have to feel guilty about it. Right? Because it's also for selfish reasons. Because those kids are literally like free babysitting for my 2-year-old. And उसकी learning भी हो रही है, उसका play भी हो रहा है, और मैं भी आराम से अपना काम कर सकती हूँ, you know. So it's a win-win for everyone if it's done right. हाँ, देखिए ये कितनी अच्छी आपने बात करी. ज़रा सी हम intention अपनी in place कर लेना, काम आप वही कर रहे हैं. और पता है recently I was reading something और इसमें था कि even जो आप बहुत like बिल्कुल selfless होके भी कोई नेकी करते हैं ना, उसमें भी आपका कोई ना कोई selfish एस्पेक्ट ग्रेन के बराबर भी होगा. सो लाइक वर नॉट दोज एंटिटीज कि बस हमने बिल्कुल हम तो सेल्फलेस हैं और हम तो प्ले डेट्स कराते हैं अपने घर में. नहीं, लाइक वीर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन बी अ लिटिल सेल्फिश इन आवर नेकीज आल्सो, कि ठीक है आखिरत की भी है लेकिन दुनिया में भी हमें कुछ उसका मिलेगा. एंड ऑनेस्टली मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि आई हैव स्पेस, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है,
आई एम प्रिविलेज्ड, मेरे पास जगह है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास हेल्पर्स हैं, मेरा खाना पक जाता है, तो व्हाई नॉट कि मैं क्यों ना लाइक अगर एक इंसान है जिसके पास अगर खाना पकाने वाला इंसान नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो फिर उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि उसने खाना मैनेज करना है, फिर घर मैनेज करना है, फिर सब कुछ करना है. तो लाइक कि 1-on-1 नहीं होना चाहिए कि मैंने एक दफ़ा करा है तो तुम भी एक दफ़ा करो. लाइक लेट गो ऑफ these things and make your life easier. Yeah, exactly. You know, I think again एक टाइम आता है जब आप बड़े हो जाते हो. नहीं होते लेकिन लोग. हाँ, प्लीज बड़े हो जाओ. Like that's like come on. हो नहीं पाते. It's like आप बड़े हो, आपको हो जाना चाहिए after a certain point, and that means that you let go of you'll be asked for your privileges. Yeah. That's कैसे the thing. use किया आपने, बिल्कुल. Allah Ta'ala कहते हैं, if you thank me, I'll give you more. That's amazing, but you were also going to be asked about what you did with those things. मुझे आई थिंक मैं बहुत छोटी थी शायद, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में थी, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है. बेसिकली वो होम स्कूलिंग करती थी एंड शी वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन. शी लिव्स इन कनाडा, शी वाज इन पाकिस्तान. तो मैं उसके घर प्ले डेट पर गई एंड देन आई सॉ हर सन एंड आई वाज लाइक वाओ, ये ना इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है और इतना एक्सट्रोवर्टेड है. और हमने तो एक इमेज बनाई हुई होती है ना कि वो तो कोई एलियन बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते. और खैर, तो उसने आई थिंक मुझे वो दुआ सिखाई थी, या किसी ने सिखाई थी कि ऑलवेज मेक दिस दुआ कि अल्लाह ताला हेल्प मी यूज़ ऑल ऑफ माई रिसोर्सेज, चाहे वो मेरा इल्म है, चाहे वो मेरा पैसा है, मेरे पास जो कुछ है, लाइक माई गाड़ी, माई ड्राइवर, माई एवरीथिंग, इन योर वे, इनके किसी तरह वो आपकी रज़ा में लगे, मेरी हर रिसोर्स. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दैट दुआ उस वक्त से. और मेरे अल्लाह ताला ने मतलब मुझे लाइक लिटरली उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वो किसी अच्छे काम में होते तो इन दैट मेक्स यू सो हैप्पी कि वो उसके कितने अच्छी तरह से काम आ गया. बेसिकली मेरे शायद वो काम ना आता या वो बंदा बैठा रहता. बट दैन वी हैव टू बी very careful with our duas also कि हम just adding a little bit. It's again, I'll just go back to the point that we need each other. We need each other, and I think अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं for अच्छाई, sometimes it's better not to overthink it and just say yes, and leave it to Allah, right? So I think हम लोग इतने obsessed हो गए हैं. If you look at I don't know, this has been my experience. Maybe others have other different experiences, but I've been surrounded by people who are obsessed with their homes. Who are, I think मेरा जो ये minimalism और hippie वाला side है ना, I think it's like a response to what I've seen. It's because I tell my my helpers, how एक चीज़ करें, बच्चों के खिलौने हटाने में, किसने कहा मैं खिलौने हटाऊँ? मैं कहा ये साफ ही है, आपने सफाई कर ली, let them play, बस इनमें एक बार हटा दो ना, क्या हो गया? बच्चों का आप वो पूरा ना वाइब खराब कर रहे हो. लेकिन आप ये देखें फातिमा कि कितना एनर्जी और कितना टाइम लगता है उस घर को स्पिक एंड स्पैन जिसको हम कहते हैं वो रखने में. आप कितना अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी तबीयतें ख़राब करी हुई हैं औरतों ने कि क्रॉकरी मैनेज हो रही है और कोई आ रहा है तो फलां बर्तन निकलेंगे, ये वो. आई जस्ट सी इट कि your time is limited, and I honestly I see it as time waste कि घर को मैनेज करना एक अलग बात होती है कि आपने अपने घर को साफ रखा हुआ है, साफ इनफ फॉर योर फैमिली, हाइजीनिक वाइज कि कोई आ रहा है तो वो एक अलग बात है. बट अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी बनाया कि अब ये चीज़ चेंज होके ये सोफे आएंगे और ये वाले कारपेट्स आएंगे, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ही लगता है मुझे तो. Exactly. And people are like, don't judge this and that. I'm like, I'm sorry. Especially after what's happened to पिछले 2 साल में जो फ़लस्तीन के साथ हम देखा है, उससे फिर और जेनोसाइड्स का पता चला और मसाइल का और चीज़ों का जुल्म का पता चला around the world and history, right? I feel like फ़लस्तीन के बाद तो our lives should become drastically different, so I am done with this whole BS of don't judge, बाहर फिरना हो रहा है कुछ तो हो रहा है. but so there comes a point where you do need to become like we are the elders now. बड़े हम बड़े हो गए हैं ना. We are stepping into those shoes. And हम और चीज़ों पे तो परमिशन नहीं लेते. जहाँ पे हमारी मर्जी होती है उस पे तो हम we do whatever the hell we want, right? So why is it that we are so scared of doing things that are going to serve others, that are going to bring change, right? So I'll give you the example of crockery की बात हो रही है अभी. This was about 10 years ago, I needed like, dinner set चाहिए था, and my mom's dinner set, it was like 30 साल पुराना एक सेट था उनके 6 का, जो उनके नसीब में कभी नहीं था.
it just stayed in like this house, right? God, huh. So Mama was like, "Tum le lo." I'm like, "Okay." I take it out. I open it up, and my husband, you know, a guest came, and they're like, "Oh, ये वाला dinner set आपके पास है, ये तो पता नहीं कितने लाखों का." I'm like, "Okay." They're like, "नहीं, मैं तो कभी ना use करूँ." मैंने, and I honestly was like, I was just quiet, you know. And I was like, it's not logical to me that 30 साल मेरी अम्मा के नाम का था, उनके नसीब में नहीं हुआ, right? And it's not logical to me कि मेरे पास एक चीज़ है मगर मैं उसको रख के और जाऊँ एक और buy करूँ. It doesn't make sense to me. बिल्कुल. Yeah, and you know what now? I mean, again, in this point, I'm not judging. I understand people have different reasons, but like in my house, the help and the family, we eat in the same crockery. हमारे ये वो अलग system नहीं है. Because we're washing it. What's wrong with you? You know, hygiene वगैरह आप check कर लें, all of that, you know. But I feel like these are the changes that we need to make intentionally. And it makes your life so much easier. अगर आप उसको इस तरह भी देखें. अच्छा, अब खैर वी कैन गो ऑन एंड ऑन. मुझे लगता है हम 2 घंटे और पॉडकास्ट कर सकते हैं, 2 बातूनी मदर्स. अच्छा, बट हम इसको वो करते हैं वाइंड अप. अच्छा, लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट cultural challenges do homeschoolers या unschoolers face in Pakistan? Yeah, honestly, I think anyone who does anything differently in Pakistan, we scare people. लोग हमसे डर जाते हैं, you know. It's like, नहीं, what do you mean? Like उनको समझ नहीं आती ना. They don't. They feel like anything different. They're like, why would you want to be different? अपने ऊपर आप unnecessary attention क्यों लाएंगे? And honestly, फातिमा, एक होता है कि you're coming from a place of curiosity. Like मुझे भी समझ नहीं आती थी homeschooling जब मेरी दोस्त कर रही थी तो, but I was curious, but I was not attacking her for her choices. I was just going to say that point that there's a difference. जो like the way people ask you, जो सवाल कर होता है ना, जिस अंदाज से कर होता है आपको पता चल जाता है. You know, is this ये अब मुझे भाई भी सिर्फ attacking point of view से कर, or someone's genuinely curious. You know, so there's a difference. So I don't even cater to people जो मुझे like who come to me with this negative energy. और बस नहीं मुझे अभी जवाब बताओ क्यों कर रहे हो, क्यों कैसे कर रहे हो. You know, they want to just, you know, find some fault to talk about, right? तो उनको तो मैं honestly I just ignore them, right? I think the biggest challenge is in you know, for especially for women, is that a lot of us are surrounded by family and people, but we are living the lives of single mothers. We are carrying it all. And you know, I would say in this, you know, Marie Munir, you had her on your podcast. Well, if somebody wants to learn more about this, she's doing a lot of good work on this. बहुत से माशाल्लाह के she takes sessions also parenting पे one-on-one भी करती है माशाल्लाह. She has a wonderful course as well, right? So what I'm trying to say is that that's something, the current struggle that I'm seeing around us. That I guess it relates to even the school-going kids, right? I just wish we would be supported more as mothers, right? Because we are just second-guessing ourselves. अच्छा लोगों को you know, बड़ी अजीब से मैंने देखा है कि अच्छा they don't want the responsibility, मगर कभी-कभी बस आके ना वो इतराज़ कर लेते हैं, अपना इतराज़ बयान कर लेते हैं, दिखा लेते हैं that oh just make sure हमारे में नजरें हैं अच्छा तुम पर. You know, like it's almost like principal आ रही report लेने, assessment report लेने, you know. And then you know, choosing a different direction becomes much more difficult क्योंकि पहले ही वो इतना अपने आप को scrutinized महसूस करती हैं all the time कि जब मैं choices जो make कर रही हूँ उससे मेरे बच्चे पे क्या असर. And then इस तरह के comments कि देखो कितना बदतमीज हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है. And then अगर आप अलग direction में जा रहे हैं फिर तो वो लोग आपका जीना नहीं मुश्किल कर देते कि. I think I could safely say that the biggest challenge, especially for homeschooling mothers and unschooling mothers, is the lack of support from within their families, and sometimes even their husbands and spouse. And by the way, you know, Aisha mentioned this in the last event I had. She mentioned this, Aisha Idris, that you know, if your husband is not on the same page, don't do it. Because it's not gonna work. It's draining then. कि आप एक वैसे it is a difficult job कि आपने अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. ठीक है कि आपने तालीम भी देखनी है, उसकी तरबियत भी देखनी है, उसकी इस्लामिक, लेकिन हर एक एरिया में आपने पूरा पढ़ना है. उसके बाद if somebody is in a questioning position कि लोग okay I'm not sure you're doing it but just keep proving me the results कि आप सही कर रहे हो, then तो फिर your job becomes 10 times more difficult. One of the most recent examples I can remember is we had a family friend come to my place and you know थोड़े बुजुर्ग थे and
they were like, they see, at that time we were doing deep cleaning, store ke kaam ho rahe the, it was very rushed, so I called extra help for that day. There was like 4 people running around छोटी सी हमारे apartment में, and they were like, इतनी तुम्हें क्या ज़रूरत, तुम्हारे क्या काम है? Oh my gosh, something inside me just like, oh my gosh, it took every ounce of me to just, you know, but don't justify. आपको बहुत haters मिलेंगे, आपको बहुत obstacles आएंगी. You need to be clear on your end goal. You need to be certain on your mission, ठीक है? And you need to stop justifying to people who will never understand why you do something. This is something so powerful. और मैंने अभी recently इस पे ये भी रील की थी कि growing up I used to feel कि अगर मैं justify नहीं कर रही ना, then you know मैं चुप हो गई हूँ and you know I'm weak, और मैं अपने आप को like you know he's gonna think कि मुझे तो उसने अटैक कर लिया और वो विन हो गया है, और मैं कैसे किसी को विन, तो मैं तो बढ़ चढ़ के मैंने जवाब देना है, और ऐसा जवाब देना है कि अगला बंदा याद रखे और मुझसे सवाल करने की ज़रूरत ना करे. बट नाउ आई थिंक जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, आप में अकल आती है, आप ये रियलाइज़ करते हैं कि देयर इज़ सो मच मोर स्ट्रेंथ इन जस्ट बीइंग सैटिस्फाइड विद योर चॉइसेस, एंड यू नो जो समझने दो. Like I'm not answerable. मेरे मतलब मुझे जो like the inner child what I wanted to say was एक तो आप खाली हाथ आए मेरे घर लंच टाइम में कुछ ले आते हैं, बंदा आइसक्रीम में ले आता है, और ऊपर से आप मुझे जज कर रहे हैं कि मेरे घर में कितने काम वाले हैं. Like you know nothing about me. Yeah. You know nothing about me and my day-to-day life. Like how can you like anyways that's another topic. लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह लोग आपको सरप्राइज करते हैं, हालांकि I was raised in पाकिस्तान, आप तो एक अलग कल्चर से आई हैं, आपके लिए तो और मुश्किल होगा, बट समटाइम्स ऑडेसिटी, लोग आपके मुंह पे क्या फेंक के मारते हैं, कोई ऐसी बात कि गैस लाइटिंग का एक अलग ही लेवल है. जरूरत कहाँ से लाते हैं, right? आप ऐसे हो जाते हो कि लाइक हाउ डेयर यू. But you know what, this is what I say. I saw something on the internet कि भाई we should have the audacity for the right stuff. फिर हम क्यों ना, हमें जरूरत क्यों ना हो? Why is our जरूरत so threatening? Why is our audacity so threatening? You know. So I think this is again, you know, if you are clear on your end goal. The reason on the toughest days, you know, I have post-its around my house, you know, to give me reminders. I have like this private जो मैं बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती, you know, I have like this private journals. I have it in my diary. Yeah. Just to remind me on those tough days. That this is why. What I'm doing and why am I doing it. तो अपना purpose ज़रूर लिखें. Yes. For homeschooling. मैंने ये first episode में भी जब पहले किया था, मैंने बताया था कि you need to have a goal. कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, एंड यू कीप रिविजिटिंग इट. जब भी आपको वो डेज आएंगे ना आपके टर्बुलेंस वाले, तो आपने उधर वापस जाना है अपनी इंटेंशन पर, अपने मकसद पर, कि मैंने ये चुना क्यों था रास्ता, मैं क्यों यहाँ पर आई. क्योंकि देयर विल बी डेज वेयर यू विल बी क्वेश्चनिंग कि क्यों मैंने क्या हुआ था मुझे जो मैंने ये फैसला किया कि आज से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और वो घर रहेंगे. हाँ, पागल हो गया. I say that to myself like once a month I'm like मैं पागल हो गई थी, like something's wrong with me, right? Yeah, but it's alhamdulillah, you know. So thank you so much Fatima. मुझे लगता है कि हम पूरा दिन भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, इतनी मज़े की आज की हमारी गेस्ट थी. और एज यूजुअल मुझे लगता है कि मुझे वैसे पैसों वाइज तो कभी ये पॉडकास्ट पैसे नहीं बनाएगी, मैंने अब छोड़ दिए, बट मुझे ना इसकी बहुत खुशी होती है दैट आई गेट टू मीट सच अमेजिंग पीपल एंड लर्न फ्रॉम ऑल दीज पीपल, जो मुझे लगता है कि एक फाउंटेन है नॉलेज का और बह रहा है उस पर से पानी, और मुझे मौका मिल जाता है कि मैं थोड़ा सा अपनी गोद में ले आऊँ. सो हमारे बच्चे आ गए, बहुत ही लंबी पॉडकास्ट चली. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर अभी तक आप हमारे साथ हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर हमारी बातें आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं. हम इनका पेज टैग कर देंगे. माशाल्लाह शी इज़ कंडक्टिंग सर्कल्स ऑल्सो फॉर मदर्स हु वांट टू लर्न अबाउट होम स्कूलिंग. और भी आई थिंक आपको इनकी पेज पे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आ रहे हैं इनकी पॉडकास्ट पर, ज़रूर आप देखें फॉर क्लियरिंग आउट योर कन्फ्यूजन ऑन होम स्कूलिंग. हम इनका पेज भी टैग कर देंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.